रनिंग व्हेनेवर यू फील लाइक कि भाई मेरे को ना अभी फ़ोन की वो मेरे को फ़ोन का वो चाहिए भाई, अभी चाहिए मेरे को, एक स्क्रॉल चाहिए, जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, डू एक्स्ट्रा पुशअप्स। उस टाइम कुछ भी हार्ड टास्क कर ले। माई ब्रदर, डू यू रिमेंबर देयर वॉज अ टाइम इन योर स्कूल डेज जब हर दूसरा या तीसरा बच्चा एक क्रिएटिव जीनियस था। वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करता था टीचर से, एंड दे वर ऑलवेज थिंकिंग समथिंग टूवर्ड्स creation, building. It's something that how they would change the very fabric of this world. So they're always living in the flow and thought state and in their zone. They're always thinking, and when they were thinking, उनकी हमेशा thinking काफ़ी raw होती थी, और वो they don't get themselves interrupted by any other chaos, noise or anything. Fast forward right now, how many people are actually thinking? If you go to college or school, what was the last time, bro, when you actually thought with your thought, with your original thought, and you focused on that thought, and you actually turn into a really great real form? When was that time, brother? You're not even thinking anymore, brother. You cannot even sit in your room for more than 2 minutes without your phone. Without, like moving. Your thoughts are not even still. Do you understand where is the problem? The problem is, bro, because you are overstimulating your mind with dopamine. You are overstimulating mind with absolute infinite distraction. You're not, there is no such thing in your mind that is whispering, ki bro, wake up, we need to create something. No. You're not even thinking. Bro, पहले टाइम में होता था ना, your dopamine was absolute balanced. And truly, you can rebalance it. Still. But I would tell you a story. When you actually build something, create something, or do a absolute really great workout, that time your dopamine comes up. It hits you, it makes you feel good, you feel motivated. But now, you're constantly bombarding yourself with absolute infinite scrolls. और तेरे माइंड को लगता है कि ब्रो, कि ये बंदा कुछ कर रहा है, क्योंकि इसीलिए मेरे को इतना डोपामिन मिल रहा है भाई, मैं इतना डोपामिन दे रहा हूँ इस बंदे को। मतलब मैं इतना जब तेरे माइंड को लगता है कि भाई ये बंदा कुछ कर रहा है, तो इसीलिए मैं इसको इतना डोपामिन दे रहा हूँ। बट कुछ समय बाद तेरा माइंड ना सेटिस्फाई नहीं होता जब तू स्क्रॉल बंद कर देता है, तू हिलने लग जाता है, तेरी शेक जैसा होने लग जाता है, यू आर नॉट इन एब्सोल्यूट स्टिल स्टेट। तेरा माइंड कंफ्यूज है, बोलता है कि भाई डोपामिन तो इतना दिया मैंने, सारा प्रोडक्टिव कहाँ है यार, लाइक इस बंदे ने तो कुछ किया ही नहीं। He didn't create anything. So it was an infinite scroll for nothing. It was an infinite pleasure for something that is not in a real form, and that is not going to help. Then eventually it bombard you with the dopamine tolerance. And now how many you scroll, और तेरे को और scroll करने पड़ते हैं फिर, and you're not creating anything. You just numb your dopamine. And you reach to the level that is called dopamine tolerance. You just fucked it up. Overstimulated with everything. वो वाली distraction जो तेरी real life में help ही नहीं करेंगी. तो हमेशा बीटा स्टेट में रह रहा है. तेरी ब्रेन वेव्स जो हैं वो बीटा स्टेट में है ब्रो. 13 से 30 हर्ट्ज के बीच में चल रहा है तू लाइफ को लेके.
You need to understand it. This is an absolute attack over yourself. You need to create something. And if you're unable to focus or you're unable to think about anything that you use, तू पहले सोचता था when you were a kid, तो हमेशा अलग अलग बातें करता था. You wanted to create something. Yes, idea. Then eventually what happened in the process while you growing up, something happened, right? You started to use your phone, you started to use the screen, and eventually you got overstimulated with so many things, so many distractions, endless shorts, endless videos that are not even productive towards your real growth. And in the mean, तू उस चीज से addict हो गया. And what if I tell you, bro, कि these things that you're watching, endless things, scrolling and all those things, it is more dangerous than heroin and weed. You know why? क्योंकि ये socially accepted है, bro. And when it is socially accepted, you think, oh, nobody's stopping me. You start to doing it. But eventually you're not understanding it. You're growing old as a man. And you're a man, you must build something, a real thing. Not scroll, bro. Not scroll sending reels to your friend. That is not productive, bro. You need to detox yourself. You need a dopamine detox. You're killing yourself. When was the last time your mind was absolute focused? When was the last time जब तूने कोई भी ऐसा वर्क किया, तू एक डीप वर्क जोन में था, एक थॉट स्टेट में था, ब्रो, फ्लो स्टेट में था, जब तेरी प्रोडक्टिविटी जो रूफ से ऊपर जा रही थी, वक्त जो था वो तेरे को फील ही नहीं हो रहा था. बट एट दिस वेरी मोमेंट, वेर एवर यू गोना पुट योर फोकस और योर अटेंशन ऑन, इवेंचुअली यू वुड, तेरे को एक मिनट भी ना एक घंटे जितना लगेगा, बिकॉज यू आर नॉट ट्रूली इन अ फ्लो स्टेट. योर माइंड इज इन chaotic state. बिकॉज ये ना चीप थ्रिल से एडिक्ट हो गया भाई, वो स्क्रॉल से स्क्रॉल. Even though you're trying to read something, or you do a work, you still touch your phone because you got addicted with it. And I would tell you a fact here कि भाई जब तू एक किसी work में कर रहा है ना, there are a lot of people what they do is when they try to focus on a certain work, और वो उस flow state में शायद पहुंच भी जाते हैं, then eventually वो क्या करते हैं, फोन का ना थोड़ा नोटिफिकेशन पेइंग मैसेज आता है, उसको चेक करने लग जाते हैं. चाहे वो 10 सेकंड या 1 मिनट के लिए तूने चेक किया ना ब्रो, तेरे माइंड को 23 मिनट लगेंगे वापस रीफोकस करने पे जिस वर्क पे तू फोकस कर रहा था. सो यू डिलेइंग इट. मतलब 8 घंटे का वर्क किया तूने और प्रोडक्टिविटी सिर्फ 2 घंटे की आई तेरे पास. तेरा माइंड जो है वो अटेंशन रेजिड्यू पे चल रहा है, ब्रो. यू गेट इट? Even though you get yourself back into the work, but still your mind is thinking about that notification, that message. It is not fully focused. Bhai jo invention, those who are musicians, scientists, creative genius, philosophers, वो हमेशा अपने आप को साइलेंस में रखते हैं. They don't let themselves in a chaotic state. They don't put themselves in a chaotic state. They don't get dopamine so often because they know they gotta keep it balanced. क्योंकि अगर ये over stimulation हो गया ना bro, your mind chemistry actually kind of disturbed and you cannot truly focused. And when you cannot truly focused, bro, how would you actually create something? Your mind is not even with you. It is chaotic, bro. So many thoughts, so many things are going in your mind. Where is the real thing? You are absolutely disturbed at this very moment. That's why a lot of young men at this very moment, they have fractured attention span. They cannot think straight, brain fog, unable to focus. Because उनका mind जो है ना वो chaotic और overstimulated वैसे जी रहा था. और जब भी वो किसी वर्क स्टार्ट करने लग जाते हैं, कोई नया वर्क स्टार्ट करने लग जाते हैं, दे कैन नॉट ट्रूली फोकस ऑन इट. इट इज ऑल द प्रॉब्लम ऑफ द डोपामाइन, ब्रो. यू आर एंडलेसली डूइंग थिंग्स that are not, you are endless doing things that are not actually taking you into a creative states,
into state where you actually turn out into a like तेरे माइंड ने इतने डोपामिन दिए बट तू उसको फिजिकल अपनी रियलिटी में अगर चेंज नहीं कर पा रहा है, वो डोपामिन आया बट इन रियल टाइम देयर इज नो सच थिंग, इट मीन्स यू आर फक्ड अप नाउ. I would tell you, bro, how you can actually do the dopamine detox. Bro, first सबसे important चीज़ है मेरे भाई, तेरे को ना मल्टीटास्क नहीं करना है. You have to understand it. You gotta create a ritual. एक दिन में तेरे को भाई जब तू उठेगा, the first thing you're not gonna touch your phone. You're not gonna touch your phone. You straight up gonna wake up, get yourself fresh, and boom, छत पे जाएगा या कहीं भी जाएगा जहाँ तेरे पास धूप आती है. You're gonna sit there, कपड़ों के बिना, wear the underwear, whatever, just sit there, आंखों से देख, make your body alert, melatonin तेरा नीचे जाएगा, circadian rhythm तेरा थोड़ा aligned होगा natural clock के साथ. Then eventually you would get back to your place and you would start reading something that is absolute hard. No matter how much your mind is telling you, bro, कि यार मेरे को वो करना है, मेरे को देखना है, वो phone देखना है. It doesn't matter. It is not real. It's not going to help you. Just start reading a fucking book. 10 मिनट पर या 20 मिनट पर. That's it. Start reading it. And then eventually start do deep breathing, deep breathing, do meditation, visualize about your day, visualize about your future, show gratitude towards your future self. अपने phone को grayscale, the grace display that you can actually do it in iPhone. I don't know about the other Android, but there must be some way that you can do it. और अपने phone को सिर्फ 3 बार यूज़ कर, मॉर्निंग में, नून में और नाइट में. दैट्स इट. और जब सोता है अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दे भाई. और जो भी सोशल मीडिया है भाई, उसको तभी यूज़ कर इफ़ यू आर क्रिएटिंग मनी आउट ऑफ इट, इफ़ यू आर डूइंग मार्केटिंग or some other thing. But if you're just using it to scroll or texting some other people, it is not helpful, bro. Don't do it. You're wasting your life for nothing. Or ya to, like, if you still have those apps, put them in a fucking folder and call it a poison. अपने phone पे एक wallpaper रख कि war mode. You don't have to use phone. Write plans कि what exactly you're gonna do. अपने journal पे सब कुछ, like what did your day gonna look like. Then eventually you would feel good, bro. Start working out, do the, learn to do the sparring, go for running. Whenever you feel like कि भाई मेरे को ना अभी मेरे को फ़ोन का वो चाहिए भाई, अभी चाहिए मेरे को, एक स्क्रॉल चाहिए. जस्ट स्टार्ट वॉकिंग, स्टार्ट रनिंग, डू एक्स्ट्रा पुशअप्स. उस टाइम कुछ भी हार्ड टास्क कर ले, क्योंकि फिर तू अपने माइंड को ना न्यूरोप्लास्टिसिटी को सिखा रहा है कि ब्रो मतलब वो हिट आया था बट मैंने उस टाइम ना हार्ड टास्क किया. तो देन इवेंचुअली यू टीचिंग योर माइंड व्हेनेवर दिस थिंग गोना कम, यू वुड डू समथिंग दैट रिक्वायर्स एफर्ट एंड योर माइंड गोना लर्न दैट थिंग एंड बूम, slowly, gradually, you're gonna overcome it from it. Do it for 30 days, bro. And also, take cold showers. अपने ओवर में, अपने sympathetic nervous system को थोड़ा shake कर, and you would feel better. You would feel that your focus is coming back. Your memory, वो जो memory वाला muscle है ना bro, memory is like a muscle, focus is like a muscle. वो सारे muscle जो है ना वो भाई grow करेंगे, because now your mind is getting back. Your thoughts are getting back. Your brain waves are getting back in a right state. You're not giving your mind overstimulated shit from external things that are not creating any true purpose, any true productivity for your life. Simple. That's all you gotta do, bro. So there are a lot of people, I think there's a lot of people that do this thing. वो सोशल मीडिया तब इसलिए भी यूज़ नहीं करते कि भाई उनको स्क्रॉल लोग अच्छे लगते हैं. They also do it because they are bored, insecure, they don't have a purpose, they don't have a mission. So they try to shut it down with endless scrolling. What is that? भाई जब तक तू वो जो तेरी चीज़ें हैं ना उनके साथ जब तू फेस नहीं ना करेगा, you cannot truly detox yourself. So bro, if you truly want to detox yourself, then what exactly you gotta do? जहाँ तू बोर है ना bro, उस बोर्डम को फेस कर, क्योंकि भाई साइलेंस
और बॉर्डम में ही इन्वेंशन जो है वो इमर्ज और उनको तू बर्थ देता है ब्रो. अगर तेरे पास इनसिक्योरिटीज हैं तो उनके ऊपर वर्क कर ब्रो. यू कैन नॉट जस्ट स्क्रॉल एंड शट दोज थिंग्स बिकॉज दीज आर द रियल ट्रूथ. और जब ये सच तेरे को आता है तो तेरे को ये भी बताता है कि भाई तेरे पास एक्चुअल में कोई पर्पस नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इंटरनल कंपास नहीं है, और तू वो सच सुन नहीं पाता. सो यू ट्राई टू शट इट डाउन एंड यू स्टार्ट स्क्रॉलिंग, यू स्टार्ट talking with people that are not serving any true purpose. So for fuck's sake bro, focus on these smallest element that actually gonna change your life and do it for 30 days. Your life would be absolutely on the right clock. फिर सोशल मीडिया को चाहे डाउनलोड कर, फिर उसको अपने हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज कर, and then eventually you would feel better. You would create something that is life changing for yourself. You need a detox bro. It is not like a detox anymore. It is more like a you're gonna reborn yourself. You're gonna reborn. So that's all you gotta do, brother. Take care of yourself.